देखिए क्या होता है, इन्वेस्टमेंट भी ना कभी कभी लोगों को वैसा लगता है जैसे 5वीं क्लास के बच्चे वाला काम लगता है कि इन्वेस्टमेंट में हमको जिसने रिटर्न सबसे ज्यादा दिया वही अच्छा लगता है। मान लीजिए आपकी 5 स्कीम्स में पैसा लगा हुआ है, ये आपको लगेगा जो स्कीम सबसे ज्यादा रिटर्न दे रही है उसी में पैसा डाल दो, विच इज नॉट द राइट वे। कैसे पास्ट में आपने देखा इन पर्टिकुलर कैटेगरीज ने या इन फंड्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, तो आपने क्या किया, आपने उन्हीं फंड्स में और पैसा डाल दिया, और पैसा आया और डाल दिया, वहीं पे जाके हम फंस जाते हैं। कैसे फंसते हैं? क्योंकि मोस्ट लाइकली आपके उस एसेट क्लास का वो हायर लेवल है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बहुत सिंपल सा ओवर वैल्यू हो चुका है ऑलरेडी। दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू चेज द पास्ट रिटर्न्स, एंड दैट इज व्हाई सेबी हैज क्लियरली सेड, कहीं भी म्यूचुअल फंड की एड के नीचे लिखा होता है पास्ट रिटर्न इज नॉट अ गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। हम इतने नार्सिसिस्ट, मतलब इतने ज्यादा सेल्फ एब्जॉर्ब, ज्यादातर लोग, हम इन्वेस्टर, इसमें मैं अपने आप को भी गिन रहा हूँ, हम ऐसे क्यों होते हैं? या हमें लगता है कि मैंने 110 पे खरीदा है तो अब सिर्फ जनता बाय ही करेगी, कोई सेल नहीं करेगा। इस तरह से हम ये क्यों सोचते हैं? हम मार्केट का टॉप भी पकड़ना चाहते हैं और बॉटम भी पकड़ना चाहते हैं। I have been running a stock broking firm also, and at one point of time, long back, I took a decision that I will stop my stock broking business because of a reason, जिसको अभी सेबी ने लास्ट ईयर रिपोर्ट में पब्लिश किया है। 92%। राइट, 92 तो बड़ा कम बता रहे हैं एक्चुअली, मैं बोलूंगा बड़ा कैमोफ्लेज करके अच्छा नंबर दिया है। ऑलमोस्ट ऑल द पीपल हु आर डूइंग ट्रेडिंग आर लूजिंग मनी, एंड लूजिंग मनी इज नॉट द ओनली लॉस, बिलीव मी, दैट इज द लेसर ऑफ अ लॉस, यू पुट इन मोर। A lot of times we have seen, because they don't want to tell their family कि मैंने इतना लॉस किया है, they will इकट्ठा 5 पैसा Yes. from somewhere, yes. they will फिर put वो सट्टा खेलते more, हैं। saying कि नहीं अब तो मैं ठीक रहूंगा, अब तो मैं ठीक रहूंगा, and there is no limit how much you can lose. रिवेंज You must have ट्रेडिंग seen. कहते हैं इसको हम। Whatever good names you want to give it, but problem is, what I say is, wherever you have realized that you are going wrong, please stop. First, Yeah. you should not do it. It's not something, it is not an easy thing. See, anything that is coming easy is a problem. Anything which is coming free has a problem. Anything coming easy is also a problem. So ideally, if it would have been so easy, why would people really go and work in fields? Why would they open their businesses? Why would they convince people to Yes. buy from them? तो यही करेगा हर कोई। यंग कपल जो लेट अस से गुड़गांव में नौकरी करता है, जो कि अच्छा पैसा भी कमा रहा है, गुड़गांव में अपने लिए 3 BHK घर लेना चाह रहा है। टेल मी व्हाट परसेंटेज ऑफ दैट मनी वुड बी द EMI? ओवर 60%। So I've got many examples where people got stuck in this. अब आपने वो एक रियल एस्टेट खरीदा और गॉड फॉरबिड वो एक रियल एस्टेट आपका बैड डिसीजन हो गया। बैड डिसीजन किन कारणों से हो सकता है? बिल्डर चोर था, whatever ABCD, आपकी चॉइस ऑफ लोकेशन ठीक नहीं थी, लेट अस से गवर्नमेंट रेगुलेशन आ गया, उस पर्टिकुलर एरिया की डिमांड चेंज हो गई, आपने अपने टोटल नेटवर्थ का इतना बड़ा पैसा आपने डाल दिया। अब इसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन रिस्क। यू आर कंसंट्रेटेड इन वन थिंग, इफ इट गोज गुड वेरी गुड, इफ इट गोज बैड यू आर डूम्ड। बट जैसे आप स्टॉक आपने खरीद रखा है, 1-2 शेयर बेच सकते हैं। म्यूचुअल फंड है आपके पास, 10 करोड़ का आपका होगा, पर आप उसके अंदर से 2-3 NAV निकाल करके 5-10-15 हजार कर सकते हैं। सेम विद गोल्ड, काट के बेच सकते हैं। एवरीथिंग हैज पार्शियल लिक्विडिटी एंड हाई लिक्विडिटी, इजीली वो लिक्विडेट हो जाता है। रियल एस्टेट लिक्विडेशन के अंदर तो प्रॉब्लम होती ही है, वो तो ऑब्वियसली टिकट साइज इतना बड़ा होता है, लिक्विडेशन की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट रियल एस्टेट की बहुत हाई है। बट आप उसको पार्शियली लिक्विडेट भी नहीं कर सकते। घर के अंदर से आप ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक बाथरूम बेच दिया, पूरा ही बिकता है। फिर हम क्यों प्रेफर करते हैं? इज इट जनरेशनल? Sometimes good, sometimes bad. Our biggest teachers are our parents, sometimes grandparents, sometimes neighbors, sometimes just like other relatives who always want to give ज्ञान whatever they have. ज्ञान है या नहीं है, but देने का है. That's the easiest thing that we can give to others. So everybody has that saying, घर ले लो सबसे पहले. In fact, lot of times we see somebody has started making money and they are bogged down into this. I have a client based in Calcutta. They have a son who is right now working in Hyderabad, and he told me, I might need this money. Most likely I will need this money in some time. Why? Because I have to help my son buy a house in Hyderabad. I said, boss, give me answer to few questions. Question number 1, is your son confirmed that he will only work in Hyderabad all the time? No. I said, I know his career. Last 10 years, changed his places at least 3 times. This is the 3rd place he is living in terms of city. You have houses in Calcutta, you have houses in Delhi. If supposing tomorrow he has to settle some place, which is as per his choice, will it be Hyderabad? He said, probably not. I said, but then you want to buy an asset which is really going to cost money from
your side and EMI from his side also. He said he's paying rent, but I said rent is his choice. 1 year down the line, 2 year down the line, he want to leave that job. He can easily take a decision to move to any part of the world. Why only India? Any part of the world. Freedom But bhi if he roka would hua have bought that Hyderabad ki property, you think that decision for him to change job is going to be so easy? The layering or filter to take that decision will be loaded with the house that I have bought. I have to pay EMI. Now I will go to another house. I will pay rent there then. So actually, real estate is emotional. A lot of people say कि उन्होंने generational wealth अपने घर से कमाई है. Can mutual funds help you create generational wealth? Supposing you are doing only 10,000 rupees month investment, SIP, and let us assume that you are going to do this for 30 years. If I ask you to put aside 10,000 rupees every month, it's a very easy thing to do. Just do one small thing. Every year add inflation of 10% in that. Easy. In 30 years, you will end up having almost close to 9 crore rupees. In fact, if I change this figure to something bigger, it is possible for you to have 100 crore rupees in your kitty by the time you are maybe 50, 60. Hello, Amit sir. Thank you for coming to my podcast. Ideally, what we want is to give people advices in very practical aspects of their life. आप एक wealth management company चलाते हैं. And today we're going to be talking about mutual funds or myths around the financial literacy in India. एक बार आप बताएंगे थोड़ा सा कि आपकी कंपनी Om Wealth क्या करती है? Yeah, Umer, thank you so much, Umer, for calling me today and to do this podcast, which is named as Open Playbook. Open Playbook. So what I do, my name is Amit Suri, first of all, and I am a CEO and founder of a company called Om Wealth Private Limited. And personally, I have been into the space of financial management, wealth management and financial planning for the last more than 3 decades. So that's how long we have been doing it. In our company, we help individuals and corporates primarily manage their money and primarily see what and how they can manage their money better, grow their money better, and sometimes protect their money. What do you mean by protect their money? So protect their money is like when you have a lot of money, your biggest fear is of losing money, something. Okay. So the primarily thing, behavior works like this. When you have something, you also have a something to lose. चला गया तो क्या होगा? Yeah. So all those people who have really good money, their foremost concern is how do I preserve it? And then their second thing is how do I grow it? Okay. But you cannot really take away that preservation from them. Definitely. So what are the biggest misconceptions Indians still carry about mutual funds? Yeah, mutual funds have become very, very popular over a period of, it is. SIPs. Over a period of last more than, it's been there for almost 2 decades now primarily. But as mutual funds have been gaining a lot of acceptance in the market, it is also, there are a lot of misconceptions that are coming into that. And the major misconception people have is कि FD का return देगा या FD से थोड़ा better देगा और safety भी FD का देगा. Right? That's one of the major misconceptions. But what I would want to say is, it's not like that. This is not something that you can compare with FD. Mutual fund is a bigger phenomena than anything like an FD. Mutual fund gives you choice. It gives you choice from ultra safe to something which can give you ultra high returns. So you have a whole gamut of instruments within a mutual funds which you can do. So that's how it is. Let's just break that down. लोग FD से म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर रहे होते हैं क्योंकि पेरेंट्स हमारे मतलब नॉट नेसेसरली पेरेंट्स बट मतलब जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज ट्रेडिशनल फाइनेंशियल लिटरेसी के से जो लोग आ रहे हैं दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट FD तोड़वानी है. अब तो मीम भी जोक्स भी बनते हैं इस पर. FD और म्यूचुअल फंड में जो डिफरेंस है रिटर्न्स का मैसिव है. एक जगह कोई 7 है, एक जगह 14 के आसपास रहता है. बट हाउ आर दे इनहेरेंटली डिफरेंट और साइकी वाइज लोग क्यों प्रेफर करते हैं अभी भी? तो उमेर साइकी पे आते हैं. बेसिकली क्या है, एक FD इज मोर लाइक समथिंग जिसमें आपने पैसे डाला एंड देन यू जस्ट स्लीप ओवर इट. वेयर एज म्यूचुअल फंड्स इज मोर लाइक अ क्रिकेट अकेडमी. What does a cricket academy do? Cricket academy train you
to play a better cricket. What it means is that you will get trained, you will become better. But what it doesn't do is it doesn't guarantee you that every match you will score a century. That's not guaranteed. So same way, mutual fund doesn't guarantee you that. But mutual fund is a very process-driven system wherein you go through a process, your investment has a process behind it, there is a lot of science behind it. It ensures when done in the right manner, it actually covers your goals. The important thing is there are goals that needs to be met in your life and there are instruments. How do you match the two? That's where our role comes in. You know, we marry both the things. जैसे एफडी के अंदर गारंटीड रिटर्न्स होते हैं, लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड में गारंटीड रिटर्न्स नहीं होते. हो सकता है 1 साल के अंदर ये चीज़ ट्रू हो, बट ओवर द कोर्स ऑफ 10 ईयर्स अगर देखा जाए या 15 ईयर्स का अगर हम होराइजन लेकर के चलें, इन्वेस्टेड टाइम पीरियड, तो क्या म्यूचुअल फंड से भी गारंटीड रिटर्न मिल सकता है? सो म्यूचुअल फंड से गारंटीड नहीं मिलेगा कभी भी, बट नियर यू कैन हैव एन एस्टिमेट ऑफ व्हाट यू कैन गेट. बट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड वांट टू ब्रिंग हियर इज म्यूचुअल फंड में एक मिसकंसेप्शन और होती है, और वो मिसकंसेप्शन ये होती है कि म्यूचुअल फंड इज इक्वल टू इक्विटी और समटाइम्स सम पीपल से शेयर मार्केट. दैट अगेन इज नॉट ट्रू. Mutual fund is much more than just equity. Equity has a big component. So if your investment is for 10 years like that, then obviously you have to look at equity. However, mutual fund has got equity at one end, it has pure debt at one end, which offers you much safer instruments. But then there is a whole gamut of hybrid funds between, and hybrid fund typically means कि उसमें equity भी होगा इधर से debt भी होगा, और कभी कभी उसमें एक और असेट क्लास भी ऐड हो जाएगी लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, विच इज वेरी वेरी प्रेवलेंट टुडे. सो व्हेन यू हैव ऑल दीज थ्री थिंग्स, और मे बी you have such a whole gamut of debt and so much of hybrid and so many of equity funds, you can expect that over a period of n number of years, what kind of a return I can expect vis-a-vis where you are invested. अभी अपन का पैसा डेट में लगा होगा तो डेट वजह से रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अगर इक्विटी में लगा होगा तो एक्सपेक्टेशन ओवर अ पीरियड हम वो कर सकते हैं. बट अब इंपॉर्टेंट बात ये आएगी, एक क्वेश्चन आपका फॉलोअप ये होना चाहिए कि हाउ कैन यू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम इक्विटी काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? How can you give an estimate over equity? So it is not easy to even give an estimate on equity. But what you need to understand is an equity is driven by something which is called earnings. Yeah. Every company has a coherent thing. कितना कमा रही है, बिल्कुल. पैसा कितना वो कमा रही है is directly in relation to the price of that stock. Right? Even though at all times because of the volatility in the market, कभी कभी वो फेयर प्राइस से ज़्यादा दिखेगा, कभी कभी वो फेयर प्राइस से कम दिखेगा. बट हर स्टॉक की एंकरिंग जो है आइडियली उसकी अर्निंग्स के साथ है. सो सपोजिंग अगर एक स्टॉक है जिसकी लेट्स से अर्निंग 10 रुपये आज है, एंड लेट्स से हम उसकी प्राइस 200 रुपये हम मान के चलते हैं मार्केट में, राइट? एंड एक नेक्स्ट एग्जांपल में हम लेके चलते हैं, सेम कंपनी की प्राइस अर्निंग जो है 10 रुपये की जगह 50 रुपये हो जाती है अगले 5 साल में. तो जो उसका फेयर वैल्यू 200 रुपये है वो भी 5 टाइम्स, विच मीन्स 1000 रुपीज हो जाना चाहिए. सो अब प्राइस उसका एग्जैक्टली 1000 नहीं मिलेगा, बट उसका आपको रेंज मिलेगा. इट मे बी 800 रुपीज, इट मे बी 1200, 1300 रुपीज. बट अगर वो 800 में आपको जब उसकी अर्निंग 50 रुपये मिल रहा है तो इट इज एट अ फेयर वैल्यू, सस्ते में मिल रहा है. ऑन द कॉन्ट्ररी जब 10 रुपये की अर्निंग थी तो अगर तब 800 रुपये होता तो वो बहुत महंगा होता. करेक्ट. सो दैट इज होल साइंस बिहाइंड इट, दैट इज होल मैथ्स बिहाइंड इट, किस टाइम पे आप क्या पैसा कैसे लगा रहे हो. ठीक है, तो हमने यहाँ पे इक्विटी की बात करी, एंड म्यूचुअल फंड्स अल्टीमेटली पैसा तो वो स्ट्रक्चर से वो इक्विटीज़ के अंदर ही जाता है, बट लोग इक्विटी और म्यूचुअल फंड को इंटरचेंजेबल मानते हैं. क्या आप उसके बारे में, फॉर इट्स अ मिसकंसेप्शन कि म्यूचुअल फंड इज सेम एज स्टॉक मार्केट, मतलब इन अ वे इट इज़, बट आप उसका क्या डिफरेंस एक बार मुझे बताएंगे? हाँ, सो ये म्यूचुअल फंड एक अम्ब्रेला है, इट्स मोर लाइक एन अम्ब्रेला, जहाँ पर उस म्यूचुअल फंड के कंसेप्ट के अंदर आपके पास सारे गैमेट ऑफ चीज़ें हैं. आपके पास प्योर डेट भी है. प्योर डेट आप ऐसा देख सकते हैं
कि आपकी इन्वेस्टमेंट मान लीजिए 15 दिन के लिए है, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी, आपके पास पैसे आए, या आपके बिजनेस के कैश फ्लो में आपको पैसा आया, एंड यू मे नीड दैट मनी मे बी 15 days, मे बी 30 days, मे बी मोर. ओके, सो उतने शॉर्ट पीरियड के लिए भी वी हैव गॉट डेट फंड्स. विद इन डेट फंड्स अगर आपके पास 3 साल के लिए पैसा है, 4 साल के लिए पैसा है, देन देर आर अनदर काइंड ऑफ डेट फंड्स, राइट. इन डेट फंड्स में अंडरलाइंग एसेट क्या होती है? सो इन डेट फंड के अंदर अंडरलाइन असेट्स आपको प्राइमरीली मिलेंगे, लेट्स से गवर्नमेंट पेपर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ओके, राइट. ट्रेजरी पेपर्स भी हम लोग बोलते हैं. उसमें आपको मिलेंगे कॉर्पोरेट पेपर्स भी मिल सकते हैं, राइट. प्राइमरीली ये दो एलिमेंट्स होते हैं. इसकी वेरिएशंस अपने हो सकती है. विद इन गवर्नमेंट पेपर्स देर आर डिफरेंट ऑप्शंस. बैंक एफडी इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन. A lot of funds sometimes place their money in bank FDs also, but that doesn't mean that they are better or worse than bank FD, because it gives you a basket of all those instruments. One fund may have anywhere between 20, 30 to 50 instruments within that fund, right? So we just talked about debt funds. Debt fund के बाद में then the next category which is very interesting is hybrid funds. And within hybrid funds, one of the most known, I would say, is balance fund. Balance fund में typically क्या होता है, इक्विटी और डेट का कम्बिनेशन बन जाता है. थोड़ा डेट आएगा और बहुत सारा इक्विटी आएगा, उसको हम बेसिक सिंपल बैलेंस फंड बोलते हैं. दैट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ हाइब्रिड फंड्स. हाइब्रिड फंड के अलावा विद इन हाइब्रिड फंड बैलेंस फंड के अलावा बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे कि मल्टी एसेट आजकल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है. मल्टी एसेट फंड्स मोर देन 2 एसेट क्लासेस लेते हैं. जैसे अभी हमारे 2 एसेट क्लासेस थे, अब यहाँ पे इक्विटी डेट के अलावा इसके अंदर ऐड हो जाएगा, जैसे मेटल्स ऐड हो जाएंगे. जैसे कभी कभी इसमें हम लोगों का कुछ फंड्स में इंटरनेशनल स्टॉक्स भी ऐड हो जाते हैं, और इसमें आर्बिट्रेज भी ऐड हो जाता है. तो बहुत सारी वेरिएशन विद इन. तो इसमें जो मेटल्स होते हैं, क्या वो मेटल के ETFs होते हैं इसके अंदर? सो प्राइमरीली मेटल के ETFs होते हैं. ओके, अंडरस्टूड. So उसमें the good thing is these funds primarily what these hybrid fund offer is over a medium to long term they'll give you a stability more or less like a debt. आपको सेफ्टी भी काफ़ी दे देगा, क्योंकि वो अलग अलग असेट क्लास हैं. वो असेट क्लासेस जो है वो एक दूसरे के कॉन्ट्रा चलते हैं. जिस टाइम पे स्टॉक्स बहुत चल रहा है, कभी कभी गोल्ड नहीं चल रहा होगा, कभी कभी दोनों एसेट्स क्लासेस भी चल रहे होंगे. देर आर टाइम्स कि कभी आपके 2 एसेट्स क्लासेस चल रहे हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न आ जाएगा. बट कॉन्ट्रा में एक दूसरे को इस तरीके से रखा जाता है कि आपका बेस लाइन को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें, और टॉप में जितना अच्छा रिटर्न वो जनरेट कर सकें. तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, एंड दैट्स एन एवर ग्रोइंग कैटेगरी फॉर अस. थर्ड कैटेगरी जिसको आप लोग हमेशा सब लोग सोचते हैं म्यूचुअल फंड इज इक्वल टू इक्विटी, विच इज इक्विटी फॉर एनीबडी हु इज देयर फॉर अ लॉन्ग टर्म, and we probably will discuss about what that means also. But anybody who is there in for a long term and has got some knowledge about equities and some conviction can really use equity funds to create as much wealth as they want. There is no limit of how much you can make out of equity funds, just that you have to be in a right manner, in a right way, and most likely with the help of somebody who really knows it, if you yourself are not aware of it. So as a combination, जब आप there are times जब हम पोर्टफोलियो किसी का बनाएंगे, ऐसा नहीं है उसको हम सिर्फ इक्विटी दे देंगे या सिर्फ हाइब्रिड दे देंगे या सिर्फ डेट दे देंगे. A lot of times when we create a portfolio based on their requirements, which requirements primarily are their goals. अभी वो गोल कितनी दूर बाद आना है उसके बेस पे, और कितनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है क्लाइंट की, उसके बेस में we might be giving more than 2 or even 3, all 3 sets also. Okay. Within equity there are many options, within hybrid there are many options, within debt there are many options. So just to conclude, a mutual fund is more than equity, much more than equity, but yes, equity is a very very important class within mutual funds. Got it. So right now आप एक ट्रेंड देख रहे होंगे, और ये मेरे एज के लोगों के अंदर, लाइक वे टॉकिंग मतलब अर्ली 20s टू अप टू 30s के अंदर बहुत प्रेवलेंट है, बिकॉज हम लोगों ने वो पोस्ट कोविड रैली देखी है. डेटा सारे के सारे स्क्यूड थे, और जो
कुछ स्मॉल कैप्स मिड कैप फंड्स थे, वो 41-42% का कैगर दिखा रहे थे। उसके चक्कर के अंदर बहुत सारे लोग मेरी एज के, हम लोग पहुंच गए हैं सारे के सारे स्मॉल कैप के अंदर। और स्मॉल कैप में भी, स्मॉल कैप तक तो फिर भी ठीक था, अब एक नया म्यूचुअल फंड आना शुरू हुआ है, माइक्रो कैप। 200 करोड़ 400 करोड़ की कंपनीज का वो इंडेक्स है। तो डू यू थिंक वी एज अ जनरेशन, हम ये जो बड़े नंबर्स की ग्रोथ के चक्कर के अंदर ये जो हेडलाइंस पढ़ के स्मॉल कैप मिड कैप तो फिर भी चलिए जस्टिफाई कर सकते हैं, स्मॉल कैप माइक्रो कैप में जा रहे हैं, इज दिस द राइट वे? क्योंकि जब मैं किसी से बात करता हूँ तो उनका एक्सक्यूज़ होता है कि मुझे पैसा 20 साल नहीं चाहिए। देखिए क्या होता है, इन्वेस्टमेंट भी ना कभी कभी लोगों को वैसा लगता है जैसे 5वीं क्लास के बच्चे वाला काम लगता है। कैसे 5वीं क्लास का बच्चा? बहुत बारी हमारे साथ भी एक्सपीरियंस ये आता है और सभी के साथ आता है कि इन्वेस्टमेंट में हमको जिसने रिटर्न सबसे ज़्यादा दिया वही अच्छा लगता है। मान लीजिए आपकी 5 स्कीम्स में पैसा लगा हुआ है, तो आपको क्या लगेगा जब आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे? आपको लगेगा जो स्कीम सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रही है उसी में पैसा डाल दो, विच इज नॉट द राइट वे। मे बी दैट इज द राइट फंड टू पुट इन मोर मनी, बट नॉट ऑलवेज। सो ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये आपको बताना चाह रहा हूँ आपके पोर्टफोलियो का पूरा प्रोडक्ट मिक्स कैसे बनेगा, मोटा मोटा। बट इंपॉर्टेंट अगर हम आ जाते हैं माइक्रो कैप में या मिड कैप में, स्मॉल कैप में, तो अब मैं इस बात को रिलेट करता हूँ पहली वाली बात से। कैसे कि पास्ट में आपने देखा इन पर्टिकुलर कैटेगरीज ने या इन फंड्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, तो आपने क्या किया? आपने उन्हीं फंड्स में और पैसा डाल दिया, और पैसा आया और डाल दिया। वहीं पे जाके हम फंस जाते हैं। कैसे फंसते हैं? क्योंकि मोस्ट लाइकली आपके उस एसेट क्लास का वो हायर लेवल है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बहुत सिंपल सा ओवर वैल्यू हो चुका है ऑलरेडी, और वैल्यूड हो चुका है। मैं थोड़ी सिंपल लेवल में लेकर आ रहा हूँ इसको। मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, एक कंपनी की 10 रुपए की अर्निंग है, उसका प्राइस लेटेस्ट से 200 रुपए है, बट वही कंपनी की अगर 10 की जगह 50 रुपए की अर्निंग होगी तो उसके शेयर का प्राइस लेट्स से फेयर वैल्यू इज 1000 रुपीज, बट वो 1000 पे नहीं मिलेगा ना 200 में मिलेगा। 200 वाली चीज आपको हो सकता है 150 में मिल रही हो सकता है 250 में मिल रही हो, या 300 में मिल रही हो। तो अगर आपने मान लीजिए आज की डेट में वो 250 या 300 की वैल्यू में वो खरीदा जिसकी अर्निंग 10 रुपए ही है, यू मे बी कॉट इन द रॉन्ग साइड। दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू चेज द पास्ट रिटर्न्स, एंड दैट इज व्हाई एमफी एंड सेबी हैज क्लियरली सेड, कहीं भी म्यूचुअल फंड की एड के नीचे लिखा होता है, पास्ट रिटर्न इज नॉट अ गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। That is why, because past is past. What we have to see is future. So ideally, for anybody who has to invest in any asset class, that past actually gives you, that may give you a lot of greed. But you have to control that greed there. You have to sit down and understand, is it fair valued? Or am I just going on my gut feeling कि ये चला है तो मैं और डाल दूं? एंड दैट इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द एसेट क्लास। आप प्रॉपर्टी देख लीजिए, एनीबडी हु पुट्स इन मनी इन प्रॉपर्टी इज, ये डबल हो चुकी है। देखिए पिछले 3 साल में इतने लोग अमीर हो गए हैं, हम आ जाए। स्टॉक्स में भी यही होता है, म्यूचुअल फंड्स में भी यही होता है। मोर एंड मोर पीपल रश टू इन्वेस्ट when it has already kind of gone up at the top of, thinking that it will keep replicating it. It will not, it may not replicate. So primarily इसको एक और तरीके से बोलते हैं हम लोग, आप पास्ट नहीं खरीद रहे हो, आप फ्यूचर खरीद रहे हो। सो जब आप फ्यूचर खरीद रहे हो तो आपको क्या देखना है कि am I buying it at a fair value or overvalued or an undervalued? मैं किस लेवल पे एंट्री ले रहा हूं, तो ये समझना थोड़ा जरूरी है। However, said and done, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल 15 साल 20 साल है, जो आपने एग्जांपल लिया, और मान लीजिए आप माइक्रो कैप, तो भी मैं नहीं बात करता, उसकी अलग से करेंगे, आपने मिड कैप में भी पैसा डाल दी जिसकी वैल्यू थोड़ी महंगी थी, थोड़ा इन्फ्लेटेड था, आप 10 साल 15 साल 20 साल में यू विल स्टिल मेक मनी। बट अगर आपने उसको सस्ते में खरीदा होता तो यू वुड हैव मेड मोर मनी। बट अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम अगेन हमारे बिहेवियर में है। हमने बिहेवियर में ग्रीड देखते हुए पैसा डाला था। आपने इन्वेस्ट किया और मार्केट फॉर सम रीजन
फॉर whatever रीजंस आई ऑलवेज से रीजन के नाम बदलते हैं बट रीजंस बार बार आते हैं. आप मार्केट का ग्राफ उठा के देख लीजिए, इट विल कीप ऑन डूइंग दिस. कोरोना, ये रशिया वॉर, कुछ ना कुछ होता रहता है, ट्रम्प ट्रेड वॉर. You don't know what is going to be the name tomorrow. It is just a change of name. And the intensity will change depending on what it is. But it will happen. We saw COVID, we saw Russia, Ukraine, we also recently saw tariff. Right? In the past, we saw Lehman Brothers, we saw many other .com bubble crash. .com bubble, Harshad Mehta, so many things will come. Supposing you have invested and anything like this comes, or even otherwise, market में something which is overvalued may take some time to come to the correct value. Fair value पे आने में थोड़ा टाइम लग सकता है. तो इसको हम टाइम करेक्शन भी बोलते हैं. एक प्राइस करेक्शन होता है, एक टाइम करेक्शन होता है. आपका प्राइस करेक्शन हुआ तो एकदम से आपको रेड दिख गया और आपको दिखा मेरे 100 रुपीज 90 हो गए या 80 हो गए या whatever that value is. आपने पेशेंस खो दिया. आपने तो इन्वेस्ट इसके लिए किया ही नहीं था. आपने तो सोचा था मैं करूंगा और इसके बाद 120 हो जाएंगे और वाई नॉट 200 क्यों नहीं हो जाएंगे. राइट? बिल्कुल. आप क्योंकि इन्फॉर्म नहीं है, आपकी कन्विक्शन नहीं है, सो देयर इज अ हाई लाइकलीहुड देन आप बोलेंगे भागते चोर की लंगोटी. आप कहोगे निकाल लो कहीं ये 80 रुपए भी मेरे और 50 ना हो जाए. सर हम इतने नार्सिसिस्ट, मतलब इतने ज़्यादा सेल्फ एब्जॉर्ब, ज़्यादातर लोग, हम इन्वेस्टर, इसमें मैं अपने आप को भी गिन रहा हूँ, हम ऐसे क्यों होते हैं कि हमें लगता है कि मैंने 110 पे ख़रीदा है तो अब सिर्फ जनता बाय ही करेगी, कोई सेल नहीं करेगा. एब्सोल्युटली. और जैसे अगर मैं जैसे ट्रेडिंग करता हूँ और मैंने कोई शॉर्ट करा है तो अब तो सिर्फ लोग बेचेंगे ही. मतलब इस तरह से हम ये क्यों सोचते हैं? देखिए बेसिकली ना हम मार्केट का टॉप भी पकड़ना चाहते हैं और बॉटम भी पकड़ना चाहते हैं. हाँ, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है जब आप ट्रेडिंग में चले जाते हैं. इसीलिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस आई हैव बीन रनिंग अ स्टॉक ब्रोकिंग फर्म आल्सो. And at one point of time, long back, I took a decision that I will stop my stockbroking business because of a reason. And the reason is, जिसको अभी सेबी ने लास्ट ईयर रिपोर्ट में पब्लिश किया है 92%. राइट. 92 तो बड़ा कम बता रहे हैं एक्चुअली. मैं बोलूँगा बड़ा कैमोफ्लेज करके अच्छा नंबर दिया है. Almost all the people who are doing trading are losing money. And losing money is not the only loss. Believe me, that is the lesser of a loss. Okay. The bigger loss that happens, because a lot of young guys are also going into it. And please understand, आप जब पैसा खोते हो तो सबसे पहले आप सेल्फ डाउट खोते हो. कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है. कॉन्फिडेंस से भी पहले क्या होता है जो आपने बोला कि ये हुआ, नहीं ऐसा कैसे होगा. You put in more. A lot of times we have seen, because they don't want to tell their family कि मैंने इतना लॉस किया है, they will इकट्ठा 5 पैसा from somewhere. Yes. They will put more saying कि नहीं अब तो मैं ठीक रहूंगा. And there is no limit how much you can lose. Revenge trading कहते हैं इसको हम. आप whatever good names you want to give it. But problem is, what I say is, wherever you have realized that you are going wrong, please stop it. First, you should not do it. It's not something, it is not an easy thing. See, anything that is coming easy is a problem. Anything which is coming free has a problem. Anything coming easy is also a problem. So ideally, if it would have been so easy, why would people really go and work in fields? Why would they open their businesses? Why would they convince people to buy from them? तो यही करेगा हर कोई. मैं आपको एक पर्सनल एनेक्डोट बताता हूँ सर. जो आपने बताया ना कि आपने वो बिजनेस अपना ब्रोकरेज का बंद ही कर दिया. Because I realize people are losing money. I don't want to be helping them in losing money. You're an enabler. ना चाहते हुए भी you were an enabler. Yes. मैंने जिनसे सीखा था, जिसको ने कोर्स किया था किसी से, और मैंने सीखा था ट्रेडिंग, उनसे सीखा था. उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया और थैंकफुली मेरा पोर्टफोलियो मंथ ऑन मंथ आज तक शायद 3 या 4 महीना रहा है जिसके अंदर मेरा रेड रहा है पोर्टफोलियो. तो आई एम वेरी हैप्पी देयर. पर उन्होंने कहा था आपको सिर्फ इक्विटी में रहना है, सिर्फ इक्विटी में रहना है. क्या होता है जब आप ये खोलते हैं तो एक चेक मार्क होता है. चेक मार्क करा उन्होंने, आपकी बैंक स्टेटमेंट, सिबिल चेक करी, कुछ क्रेडिट आपका चेक करते हैं और आपका ये फ्यूचर ऑन ऑप्शन खुल जाता है. मेरा ऑप्शन खुल गया. मैंने
एक उसी दिन की एक्सपायरी की कुछ ऐसी चीज़ होती है, मैंने कॉल ले ली, वो थी भी मिड कैप निफ्टी की। अब ये अच्छी स्टोरी है क्योंकि मैंने शायद 5 या 7-10 लॉट लिए थे 3,000 रुपये के। एकदम से बड़ी मूवमेंट आई, मैंने सोचा भी नहीं था, वो एकदम से बड़ी मूवमेंट आई, वो 3,700 रुपये मेरे वो 80 समथिंग हो गए। मैंने ट्रेड क्विट करी और मैंने अपना, जिस दिन मैंने पैसा निकाला उसी दिन मैंने FNO को दोबारा बंद कर दिया, क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ में आई कि जब कोई चीज़ 3800 से 87,000 हो सकती है तो वो 87,000 भी 3800 उतनी जल्दी होता है। ये हर आदमी के बस की बात नहीं है और ज़्यादातर लोग तो ये करना ही नहीं चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, आपने जो किया था, आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपने कॉल खरीदी थी, राइट? इमेजिन अगर आपने कॉल बेची हुई हो, मार्जिन सेम ट्रेड में अगर आपने कॉल बेची हुई होती, so for a lot of viewers this may sound something else, but in a simpler sense, what he has done, it had only one way. The maximum he could have lost is 3700. 3700 but real money जो informed लोग करते हैं वो खरीदते नहीं, वो sell Selling करते होती हैं, they make money, right, by selling it. And the problem that happens there is something called unlimited loss there. Yes. And unlimited loss has another problem. You may understand that, which is you keep waiting. अभी तो अच्छे दिन आएंगे, एंड वो अच्छे दिन ऐसे नहीं आते। अच्छे दिन के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अच्छे दिन के लिए यू कांट जस्ट कीप सिटिंग एंड प्रेइंग कि आ जाएगा। इट डजंट हैपन। बिल्कुल। एंड व्हेन द बैट स्ट्राइक्स, इट डजंट strike for a limit. So, simply speaking, I always say, what is your main objective? A lot of people think that their main objective is to make money, and then they do get into F&O trading and all those things. F&O trading is, I think, nothing but not to It's be linked gambling. as, It's gambling. not to be put as making money. It is all the way, and I am not the only one saying this. Everybody, people have lost not lakhs, crores and crores and crores. Self-confidence, self-worth, a lot of thing has been lost. People have lost their lives also over this. So let's learn from their example. And this is not everybody's game. A lot of education, a lot of knowledge needs to be learned, studied before you think doing it. Otherwise, if your main objective is to make money, to make your wealth grow, there are simpler, more, I would say, more sure way of doing it. No guarantee, but much more sure ways of doing it. And with peace of mind, you don't lose anything. Yeah. And your time, ideally, your time should be to make money, enjoy life, not into subere se sham tak looking at that. That ideally is not everybody's business. And Umair, a lot of times, because we have gone into this, a lot of times what we see is a lot of people come to us and say, my bacha is doing well, he is doing share trading and making money. And I that's a red flag for me. That's a red flag for me. I say that cannot be a business. Business and investment are not the same thing. They are two different things. Let's not mix the... Yeah. Let's change gears and talk about another favorite. जैसे FD is one of the favorite financial instruments of Indian people. उससे ज़्यादा एक favorite एक ही चीज़ है, real estate. अब लोग कहते हैं real estate is much safer, much better than mutual fund. दोनों की अपनी I think pros and cons हैं. थोड़ा सा आप explain करिए कि what do you think about this statement that is real estate better or safer than mutual fund? So the point is, real estate एक बहुत अलग तरह का asset class है. रियल एस्टेट भी एक ऐसा asset class है जिसको मैं ये बोलता हूँ, it is not just investment, it is also a business. Okay. It is, you cannot look at in real estate as just an investment thing. Okay. And let me tell you, the place where we are sitting today, you bought it some time back. Yeah. Right? When you went to buy it, was it like easily आप गए कार में बैठ के, एयर कंडीशन कार में बैठ के, और आपने एक चीज देखी और आप घर आ गए? It is hell lot more than that, even if you are buying something. I looked at 44 properties before buying this one. Perfect. That you had time, you had patience, and you had knowledge, right?
and you had wanted this to be your something where you are going to live. या But if you are doing it for investment, are you going to look for 44? You probably are not even going to look for 8. You're just going to go and buy something. क्योंकि आपका काम पैसा बनाना है. तो एक मिसकंसेप्शन रियल एस्टेट में ये भी है कि ये तो पैसा लगाओ और पैसा आ गया. इट्स नॉट. देयर इज अ लॉट ऑफ sweat that goes into it, and you have to quantify the value of your sweat also. या आपका पसीना का पैसा है, पसीने में से पैसे निकलते हैं सबके. 8 महीने लगे थे. ये तो सेल्फ एक्वायर्ड टू सेल्फ यूज की प्रॉपर्टी थी. अभी इन्वेस्टमेंट का जोन अलग की बात कर रहे हैं. Okay. राइट. व्हेन यू गेट इनटू इन्वेस्टमेंट, अब आप एक बात देखिए, या उमेर आप बताइए कि अगर कोई भी आप रियल एस्टेट खरीदता है, एक आम आदमी की, वो रियल एस्टेट उसकी नेटवर्थ का कितना बड़ा हिस्सा होता है? हाई डबल डिजिट्स. सो यू आर बीइंग वेरी कंजर्वेटिव, राइट उमेर? एक कपल, यंग कपल जो लेट अस से गुड़गांव में नौकरी करता है, ओह राइट, समझ गए. जो कि अच्छा पैसा भी कमा रहा है, बट उसके बाद भी एक गुड़गांव में अपने लिए एक 3 BHK घर लेना चाह रहा है. टेल मी व्हाट परसेंटेज ऑफ दैट मनी विल बी द EMI? ओवर 60%. 60%. अभी उसकी मजबूरी है, उसको खरीदना है. सो आई हैव गॉट मेनी एग्जांपल्स वेयर पीपल गॉट स्टक इन दिस. बट अब आपने वो एक रियल एस्टेट खरीदा और गॉड फॉरबिड वो एक रियल एस्टेट आपका बैड डिसीजन हो गया. बैड डिसीजन किन कारणों से हो सकता है? बिल्डर चोर था, व्हाटएवर ABCD. आपकी चॉइस ऑफ लोकेशन ठीक नहीं थी, कुछ लेट अस से गवर्नमेंट रेगुलेशन आ गया, कुछ उस पर्टिकुलर एरिया की डिमांड चेंज हो गई. डेमोग्राफिकली लॉट ऑफ थिंग्स कैन चेंज. आपका वो आपकी जॉब चली गई, आपकी जॉब शिफ्ट हो गई. ये एक अलग तरीके का चैलेंज और आ गया. सो देयर आर n नंबर ऑफ मेनी मोर थिंग्स. बट मैं तो सिर्फ रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ. आपने अपने टोटल नेटवर्थ का इतना बड़ा पैसा आपने डाल दिया. अब इसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन रिस्क. यू आर कंसंट्रेटेड इन वन थिंग. इफ इट गोज गुड, वेरी गुड. इफ इट गोज बैड, you are doomed. You are kind of. So I'll tell you an example. So there is a client of mine who's a senior citizen, who's 70 plus kind of a thing. He has difficulty in going around places also today. So he was doing a business, running business, good business, and around 5 years, 6 years back, he decided to take retirement. Okay. Right? And the best thing that he did was retirement. उनका business बिक गया. He इकट्ठा all the money that he had. And he came to one of the places in Gurgaon only, and he bought one of the places जहाँ पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है. ये स्पेस है, उन्होंने खरीद लिया कि ये मैं इसमें पैसा लगाता हूँ, इससे रेंट आएगा, उससे मैं अपनी सारी जिंदगी रेंट से चलाऊंगा. ही वॉज अ स्मार्ट गाय. तो उन्होंने क्या किया, एक की जगह 2 डिफरेंट प्रॉपर्टीज खरीद ली. सो कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन. एंड बिलीव मी, today he is not getting rent from any of the 2 things. And that is not the end of the story. And this is a real story. Okay. This is a real story. I obviously will not name people. Right? Today the scenario is he want to exit the property. There is no demand for that. I am not saying all the real estate in Gurgaon has gone bad, all the commercials have gone bad. But this gentleman, the decision that he took on the 2 things, both of them are stuck. It was part of a bigger property, and today he is not even able to get out of it. And उन्होंने प्रॉपर्टी कैश डाउन ली थी. All the money at one go. अब आपने जो एग्जांपल दिया था एक कपल का, जिन्होंने कैश डाउन नहीं लिया, उन पे 1 करोड़ का लोन है, उनको चुकाना, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, उनको चुकाना कितना है? 2.2 करोड़ over the course of next 20 years. अब मैं आपको इसका एक पॉजिटिव भी बताता हूँ. बताइए. Right? We are discussing something which has to be from the benefit of the, right? So हम लोग real estate के ऐसा कोई दुश्मन नहीं है. Real estate is also an asset class. Now I'll give you a way. अगर आपने बाकी अपना होमवर्क पूरा किया हुआ है, तो आप रियल एस्टेट के अंदर एक्स्ट्रा कमा सकते हो. बट दिस इज नॉट समथिंग यू कैन थिंक एज अ बिजनेस ऑल द टाइम. Business is something that you keep replicating. So I am not recommending this to be replicated. So disclaimer पहले दे रहा हूँ. Now I am giving you something which you can actually make something very nicely.
If you are going and buying property, if your capacity to pay EMI is decently good, your regular income is stable, you think if you are in a private company, you think your company is not going to go through any bad phases in times to come. Your industry is not going to go through bad phases. You have to take that call that how stable I am. That's a very individualistic kind of a thing. If you think all that is done, then you go to the market. Then you check the fair value of the property. I'm not saying today. Today, according to me, Gurgaon is not at a fair value. Since we are sitting in Gurgaon, that's why I'm saying. And most of the property in India is not fair valued. Right? मेट्रो सिटीज में नहीं है यूजुअली. तो अगर वो फेयर वैल्यूड में मिल रही है, then real estate can really enable your wealth in another way. How? I'll give you an example. Supposing you have bought a 1 crore की property. I'm giving you a very simple example. अभी 1 करोड़ का कुछ बचा नहीं है, बट 5 साल पहले मिलता था. राइट? 1 करोड़ में से एज्यूम करते हैं आपने 50 लाख 40 लाख रुपए आपने कैश डाउन दे दिया. एग्जाम्पल के लिए 50 लाख मानते हैं. तो 50 लाख रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट हुई और 50 लाख का आपने लोन ले लिया जिसकी आप ईएमआई दे रहे हो. प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज इन्वेस्टमेंट, दिस इज नॉट सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला घर की बात कर रहा हूँ. और ये कितने साल का लोन लिया? 15 साल का लिया, 20 साल का लिया, दैट्स समथिंग एल्स. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हाउ कैन यू बेनिफिट सब्जेक्ट टू ऑल द थिंग्स दैट आई हैव सेड. वो चीजें सारी साथ में चलने वाली है. यू कांट गो जस्ट वन थिंग. यू कैन नॉट फिल्टर आउट कि ये तो कर लिया, ये नहीं किया चलेगा. ठीक है. राइट? बेस में इंपॉर्टेंट इज फेयर वैल्यू है, उस एरिया का फ्यूचर आपको प्रोजेक्शन अच्छा लगता है. देयर आर सम थिंग्स विच आर गोइंग टू कम अप टू दैट एरिया जो उसकी मार्केट की डिमांड को बढ़ाएगा. देयर हैज टू बी समथिंग विच विल चेंज द डिमांड ऑफ दैट एरिया. राइट? अब आपने एज्यूम करते हैं मार्केट में 5 साल में एक प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी. एज्यूम करते हैं, एक कैलकुलेशन लेते हैं. फेयर वैल्यू की जगह पे हो रही है. फेयर वैल्यू की जगह पे ही होगी. yes. बाकी जगह होगी भी नहीं. बाकी जगह आपका पेशेंस टेस्ट करेगी. आप स्टकअप हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो. आपकी पेशेंस भी नहीं है, वो वॉलंटरी पेशेंस भी नहीं है, इनवॉलंटरी पेशेंस भी है कई बारी. बट लेट अस से कुछ अच्छी चीजें भी हैं. तो आपने 14% की जगह पे आपकी रिटर्न क्या हुई? प्लीज अंडरस्टैंड. 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ की हुई, बट आपने कितने लगाए थे? 50 lakhs. यस. So at the end of that, let's say 5 years, your 50 lakhs ki property assuming is become 2 crores. Your 50 lakhs has become so-called 4 times. Obviously, you are paying EMIs. Some part of that is your interest also. So not exactly वो 3 गुना पैसा हो गया, but 2 से 2.5 गुना हो गया. Almost like, sorry, 4 गुना नहीं हुआ, 3 गुना के करीब हो गया. Right? So अगर आप इन पैरामीटर्स को देखते हुए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो ठीक टाइम पे और एग्जिट कर रहे हो, वेरी गुड वे टू गो अबाउट इट. बट अगर इसमें से कुछ भी पैरामीटर गड़बड़ हो गया, आपकी वो लोकेशन जो आप सोच रहे थे फ्यूचरिस्टिकली अच्छी होगी ना हुई, आपको लगा था वो फेयर वैल्यू नहीं थी, उसकी डिमांड ही नहीं आई, यू विल रियली बी स्क्रूड अप. यू विल नॉट इवन बी एबल टू सेल इट. So better is educate yourself well. Real estate is again not an asset class. सिर्फ पैसे लगाने से काम होगा. So you have to understand कि पैसा बढ़ाना है. जैसे आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, anybody who is watching this podcast is also investing 1 hour of their precious time. बिल्कुल. So by investing that kind of a time, get yourself educated. When you get educated, get convinced, talk to market. Money should be the last thing that should be coming out of you. What should be coming out of is that sweat. You have to really go on the ground, understand, talk to people. Talk to people with a lot of filter. If you're talking to real estate guys, they will give you the best of the best rosy picture. Oh yeah. You have to have a contra call. So primarily, you can make money in real estate subject to conditions. Right? Likewise in mutual fund also or equity also, you can make money, but not always. You have to ideally either be educated or you have to follow someone who can help you do it. सर, लिक्विडिटी का जो क्वेश्चन होता है ना, एसेट क्लास के अंदर, मुझे कोई थोड़े दिन पहले आए थे, उन्होंने एसेट क्वालिटी के बारे में बोला कि एक एसेट क्वालिटी भी एक चीज़ होती है. रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है
कि अनलाइक एनी एवरी अदर, मतलब एफडी को पूरा तोड़ना पड़ता है, I've heard, बट जैसे आप स्टॉक आपने खरीद रखा है, एक दो शेयर बेच सकते हैं। म्यूचुअल फंड है आपके पास, 10 करोड़ का आपका होगा, पर आप उसके अंदर से 2-3 एनएवी निकाल करके 5-10-15 हज़ार कर सकते हैं। सेम विद गोल्ड, काट के बेच सकते हैं। एवरीथिंग हैज़ पार्शियल लिक्विडिटी एंड हाई लिक्विडिटी, इजीली वो लिक्विडेट हो जाता है। रियल एस्टेट लिक्विडेशन के अंदर तो प्रॉब्लम होती ही है, वो तो ऑब्वियसली टिकट साइज इतना बड़ा होता है, लिक्विडेशन की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट रियल एस्टेट की बहुत हाई है। बट आप उसको पार्शियली लिक्विडेट भी नहीं कर सकते। घर नहीं, घर के अंदर से आप ये नहीं है कि आपने सिर्फ ये बाथरूम बेच दिया, पूरा ही बिकता है। फिर हम क्यों प्रेफर करते हैं? इज इट जनरेशनल? इज इट अ जनरेशनल थिंग कि हमारा साइकी के अंदर जो बताया गया है कि अपना घर अपना घर अपना घर, क्या इसकी वजह से हम इसको प्रेफर करते हैं, या ये क्यों आता है? उमेर, आपने ना बिल्कुल वो कहते हैं ना, नेल इन द कॉफिन, यू हैव एक्चुअली पुट इट एग्जैक्टली वेयर इट इज। द बिगेस्ट, sometimes good, sometimes bad, our biggest teachers are our parents, sometimes grandparents, Yeah. and sometimes people, I'm not saying about parents, sometimes neighbors, sometimes just like other relatives who always want to give gyan whatever they have. Gyan hai ya nahi hai, but dene ka hai. That's the easiest thing that we can give to others. So everybody has that saying कि घर ले लो सबसे पहले. In fact, lot of times we see somebody has started making money and they are bogged down into this, right? So liquidity is a major concern. Let me give you another example of someone I was talking just 3 days back. I have a client based in Calcutta. They have a son who is right now working in Hyderabad, and we were just discussing investments just 3 days back. And he told me, I might need this money. Most likely I will need this money in some time. Why? Because I have to help my son buy a house in Hyderabad. I said, boss, give me answer to few questions. Question number 1, is your son confirmed that he will only work in Hyderabad all the time? He said, no. I said, I know his career. Last 10 years, he's changed his places at least 3 times. This is the 3rd place he is living in terms of city. You have houses in Calcutta, you have houses in Delhi. If supposing tomorrow he has to settle some place which is as per his choice, will it be Hyderabad? He said, probably not. I said, but then you want to buy an asset which is really going to cost money from your side and EMI from his side also. He said he's paying rent. But I said rent is his choice. 1 year down the line, 2 year down the line, he want to leave that job or whatever, the other way around, he can easily take a decision to move to any part of the world. Why only India? Any part of the world. Right? But if he would have bought that Hyderabad ki property, you think that decision for him to change job is going to be so easy? No. The layering or filter to take that decision will be loaded with the house that I have bought. I have to pay EMI. Now I will go to another house. I will pay rent there then. Yeah. Right? You might save on rent here and instead buy on this. So actually real estate is emotional. जो दिखता है वो बिकता है. You can show off with real estate. I have got real estate here, I have got real estate here. Yeah. But can you show off with mutual funds? No. नहीं कर सकते. But then my question is, are you ready to pay the cost of showing off? There is a cost. Is it free? No. You have got liquidity, as rightly said by you. You're not going to say, चलो एक कमरा बेच देता हूँ, मुझे बच्चों को एजुकेशन करने भेजना है, let me do this. No. So Umair, I take things in a different manner. When we sit down with a client or a family, we'll tell them, forget about real estate, forget about anything, even forget about mutual funds. The first thing that you need to do is, and this is very, very important, what is your why?
of your life. If you have heard Simon Sinek, I really like what he says. He says, ask 5 whys of every question, everything, every decision that you want to take. Right? Those 5 whys clarify a lot of things. Go deeper, go deeper. So I am going to go simpler here. I don't want you to go deeper. My simpler version is just write down what are your financial responsibilities throughout your life. It's very simple. You don't have to break your brain on that. You will just write, I want money for my children's education. I want money for my children's marriage. I want money for buying a bigger house. That is also a goal a lot of times. I want money for X kind of vacations. I want money for next change of my car. And the best of all, I want financial freedom. I want retirement. And within financial freedom, a lot of, see, India is becoming a startup capital of the world. I may be digressing, but I am coming back. India is becoming startup capital of the world. Which means what? You and me are going to be those entrepreneurs. Right? This young generation, that young boys and girls who are today maybe working in some companies, idea will click their mind. They want to go out and experiment. So if you are bogged down by EMIs, can you really take that step? No. जंजीरें से बांध दिया आपने. So let them be out of those shackles. One. But another part is your money should help you have that confidence that if tomorrow I want to really go out and open a startup, do I have money to sustain myself and my family for n number of years? So we help people take those decisions also. Right? Obviously, retirement is the big daddy goal of all, which is like big. I can talk for any amount of time for retirement. People say, the way a lot of people say कि उन्होंने generational wealth अपने घर से कमाई है. Can mutual funds help you create generational wealth? I'll give you a very simple calculation for generational wealth, right? Okay. If you just give me a moment, I've just made a simple calculation. Okay. Supposing you are doing only 10,000 rupees month investment. SIP? Only 10,000 rupees month SIP. Yeah. Right? We are talking about what do we do with for our generation. ठीक है. Right? And let us assume that you are going to do this for 30 years. Okay. Umer, you are what, 25, 28? Something like that? 28. So if I ask you, 10,000 rupees for you is today is like nothing. Right? Nothing. And most of the generation, it is like that. Right? Thankfully. If I ask you to put aside 10,000 rupees every month, it's a very easy thing to do. Cost of whatever you may say. Right? बहुत कम है. Just do one small thing. Every year add inflation of 10% in that. ठीक है. Easy. In 30 years, I'm just giving you a 30 years ka data. You will end up having almost close to 9 crore rupees in this account. And this is a very small example. Yeah. I'll tell you what will practically happen when you start doing this. Hmm. You will not do only 10,000. Yeah. You may do only maybe 12,000. When next year comes, you will not add it by 10%. Today, the money graph in this age is like this. It is not like this. Right? You will say, abhi to paisa hai, let me do 20,000 rupees. Let me increase it by 5,000, 10,000 rupees. You will actually see, in fact, if I change this figure to something bigger, it is possible for you to have 100 crore rupees in your kitty by the time you are maybe 50, 60. And today, if I tell you 100 crore rupees, you will not believe me. Yeah. Would you? You will think like That makes sense. Mungeri Lal ke. हसीन सपना. Yeah. So this is not Mungeri Lal ka Hasiin Sapna. If you work on it diligently, you should have a very clear vision. मुझे चाहिए क्या? मुझे ये चाहिए तो चाहिए. Simple. And I am giving you this calculation at what? Assuming that you are going to make 12% return. Which is like, okay, that is what the assumption that we give. Again, assumption, no guaranteed. Yeah. But Right? 12% is awfully low. अगर आप देखें तो किसी भी अगर So let us be conservative, na? या बट कैगर तो कभी भी 13.5 के नीचे नहीं गया. No, that's a very, very wrong figure that you are quoting. I don't know where you got 31%. I need to be on another. 13.5. Okay, 13 13 and a half is Yeah. okay. So I heard it wrong. No, 31 तो But manifestation अच्छी है. So let us look at it like that. See, the point is, when we are talking about a longer period of time,
it is very important that you are conservative. Okay, makes sense. Right? Today, the economy is growing at a certain speed. You and me, both of us know that we are very, very fortunate. We are living in today's India, Yeah. which is the fastest growing large economy of the world, and it is not small. So, we have to be proud of what we have. We obviously have much more things to work on. India surely has a lot of issues which needs to be solved. Who doesn't? We surely will do that. I'm sure India will cover up that as soon as possible. But when you have an economy which is the fastest growing economy, then also I would say when you're talking about a longer 3 decades, 4 decades kind of a thing, you have to say there will be a time when a plateau will come, when the growth rate will have to come down. So let us today think something which is like sustainable for a long period of time. Got it. I am not saying it will do 12%, it may do only 10% also. Yeah. So by the end of the time, let's say your target is 100 crore and you are only at 80 crore rupees. That's Would it be perfectly like fine. a bad thing to do? No, matlab, of Today, if course. you don't start, you won't even be at 8 crore. Hmm. And today we are talking about 100 ka 90 ho gaya. I hope you are not going to come back and break my head on that. And traditionally, if you think about it, अगर यही you can't do that kind of investment in real estate कि आप हर महीने क्योंकि कोई उसका SIP नहीं होती है. But why am I comparing it to real estate? It's just So not let the me right give thing. you another example, right? Let me give you another example. Have you heard of? अभी थोड़ा उसका prominence thankfully कम होता जा रहा है, and one of the reason is SIP. But I used to give this example long time back. अभी थोड़ा सा लोगों के fade हो गए हैं दिमाग में, but this example came to my mind just now. People used to do committee and chit fund kind of a Yes, thing, right? yes. I'll give you a very, all those people who have ever done it. I'll tell you one thing which will give you the change of behavior in the whole thing. Okay. Right? It's very interesting. Supposing you are putting money into that committee or chit fund every month. You haven't taken out money from that. Every month when you go and give that money, what is the chemical reaction in you? Is it like positive or is it negative? You feel empowered. You feel I'm going. You're going there for a like that. You're giving money. मेरा पैसा जुड़ रहा है. Yeah. Right? You feel मेरा पैसा जुड़ रहा है. The moment you take that money, वो इतने महीने बाद आपने whatever that is done, and now you have got money in your hand. That money you have utilized, spent, or whatever you have done. Hopefully invested for a good cause or something. Hopefully, but whatever you have done. But next month when you go and give that money, that installment of that committee for whatever balance month, what is your chemical reaction at that time? It's a sulking. देने जाना पड़ रहा है, ये कब खत्म होगा? हाँ. So that is the difference between an SIP and an EMI. An SIP gives you empowerment. EMI may give you empowerment, but at times it will surely. साल में 4 महीने तो ऐसे आएंगे काश ये EMI ना होती. Yeah. SIP में भी आप दोगे, you will feel. So that's the chemical reaction. And Umair, believe me, I'm giving you something off the track, and I'm sure your viewers knows this, but if they don't, this is important. Which is 99% of any of your decision is not based off anything other than emotions. Yes. You go and buy a car full of emotions. You buy as simple as a packet of biscuits. Which packet? This packet or this packet? The packet which has a fancy packing will most likely be your... Or the one that has nostalgia or other aspects, Anything. emotions. It is Yes. all emotions. It is all emotions. Today you and me are sitting. We have a lot of emotions going through right now also. Right? Sometimes I may be very happy telling you something. Sometimes I may not be very happy telling you something. Right? So our decisions are also based on that. And the reason of why I am telling that, ये तो पता है सबको. But the reason is you need to keep a check whenever you are taking any important decision. Is this emotional or is this like 80% emotion, 20% logic, or is it 100% emotion, or is it a 20% emotion? Because if you are buying something which is ठीक है, खाया, consume किया, it's not very costly, it's okay to be emotional. And even if you have to eat something, your conscious mind will tell you this is not good for your health.
then your emotion has to be kept in check. Yeah. दाल मखनी बटर चिकन बहुत स्वाद लगता है, but it has its different thing happening. Yeah, it's a high when you're eating it, but after you're done eating it, it's a crash. It's a guilt. That's what I'm saying. So any decision that you are taking from as to it's important what you are eating to where you are investing. Both these things are so very element. That's why it is said health and wealth are two most important things. Sometimes people say health is more important, sometimes people say wealth is more important, but simply nothing is more or less. Both are very important. Both are has to be one and one in your life. Anything else is 2, 3, 4, 5, 6, wherever you want to put in, but these two things you cannot. Like inherently the way you explained कि we are emotional people, or some people prey on our emotions and make us take the wrong financial decisions. आपने इन्फ्लुएंसर्स को देखा है रिसेंटली? इट्स अ प्रॉब्लम दैट आई थिंक काफ़ी बड़ी हो गई है. ये टेलीग्राम के अंदर आपको 2,000-3,000 रुपये मंथली के ऊपर आपको टेलीग्राम पे बुलाते हैं. अपने टेलीग्राम के ऊपर ये कॉल पुट की कॉल्स देते हैं आपको, सिग्नल्स इसको कहा जाता है, और उसके अंदर बहुत लोग पैसा लूज़ कर रहे हैं. व्हाट्स योर ओपिनियन कि लोगों को इन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को सुनना चाहिए? देखिए, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को सुनना चाहिए. आई वुड से यू हैव टू बी वेरी चूजी. You have to be very choosy. First of all, how do you be choosy? So there are few red flags that you have to see. The number one red flag and the most important red flag is guaranteed. If anybody is telling you guaranteed, please stop listening. Why are you even wasting another second of your life? Isn't your life important? Is your time important? Don't waste another next second. If somebody is recommending, saying, I will give you high returns, and the starting point is high returns. Point is, if you are doing something and it may result in high return, that's a different thing. Important is not high return, important is what is to be done. And if somebody is saying you don't need to work hard, it's as simple as that. There are so many red flags. You guys have to be, and we are talking about finfluencers, not just finfluencers. There are so many scams that is happening every day. I would say they are another big menace that is going on in our life. A phone call comes to you or message comes to you and they tell you easy money or things like that and ABCD. Anything that is simple, please be away from that. It is even important is whenever you want to deal with someone. See, I'll give you a real estate की बात करें तो एक example. Why would A developer's property will sell at a premium and a B property maybe just at adjoining place will sell lower? Market perceived value brand? Brand. Yeah. It is because supposing, let's say for example, I am not trying to promote myself, but let's say I have invested 30 years of my career helping people make their money. Now every day when I have to take decisions for my client, help them take decisions for their money, I have on my shoulders 30 years of integrity. 30 years of integrity. My bad decisions will multiply and destroy what I have made in 30 years. Your image. Yeah. 30 years will go by just like that. Just like that. So every day I have to be aware, what am I carrying? Right? This is not to promote. This is just to tell you. Which means whenever you are talking to someone, maybe that person does not have a experience in those number of years, but do they have education? Do they have ABCD? So there are so many red flags. The only problem is greed. When the greed overtakes you, which is another emotion that we were talking about, when greed overtakes you, you get blind to anything. It's the most powerful emotion. Just like lust. These are all emotions. Whenever that emotion overpowers you, your thought process changes. You don't really think logical. So point is, every decision has to be thought and filtered. Kitna logic hai, kitna emotion hai. And is this particular decision okay to be run by emotions? True. तो पीपल जैसे आपने कहा कि एक रेड फ्लैग है जो ये बोले कि विदाउट हार्ड वर्क आपको पैसा कमा के देंगे. दैट्स वन ऑफ द रेड फ्लैग दैट यू सेड, जिस पे मैं अटक गया. डोंट यू थिंक
म्यूचुअल फंड, अब मैं आपको कॉल आउट नहीं कर रहा, बट म्यूचुअल फंड भी तो करना बहुत आसान है, जिस तरह से आपने मुझे एक्सप्लेन करा। अगर आप इसके अंदर इसकी इमोशनल के बारे में आई थिंक आप बताएंगे, इसके इमोशंस किस तरह से एक इन्वेस्टर को जो म्यूचुअल फंड में डाल रहा है उसमें जाते हैं, बट इनहेरेंटली अगर आउटसाइड इन पर्सपेक्टिव, मैं भी एसआईपी करता हूँ, तो ऑन दैट फ्रंट क्या करना पड़ता है आपको? जो है अपने बैंक अकाउंट के अंदर बैलेंस रखना पड़ता है, वो अपने आप ऑटो डेबिट हो जाता है, और अगर आप वो 30 साल छोड़ दें तो आप करोड़पति बन सकते हैं। तो इजंट दैट टू इजी? उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? सिंपल सी बात यह है उमेर कि जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट आप डाल रहे हैं, और वो जिसको आप कैगर बोलते हैं, जिसको आप कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, वो है टाइम। सो जब टाइम आ जाता है तो इजी मनी नहीं रह गया, राइट? व्हेन यू आर पुटिंग इन टाइम, टाइम इज रियल वर्थ, राइट? एनीबडी सेइंग कि मैं पैसा डबल कर दूंगा, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हैज टू बी कितने टाइम में डबल कर देगा? या इट इज मोर लाइक अ मूवी का डायलॉग, मेरा बच्चा इतना बड़ा है, नीचे वाला हाथ कहाँ है? दैट विल डिसाइड कि वो कितना बड़ा है। सो लाइकवाइज मनी विल डबल इन 2 months और मनी विल डबल इन 10 years. Hell lot of a difference. या So the real question from that point, and also from the point of view of, is it sapna? No, it is not sapna. Will it happen exactly the way you're thinking? No. And again coming to the example that we were saying, right? आप सोच रहे हो वो मेरा लेटेस्ट, चलो 100 करोड़ crore, की 80 100 करोड़। crore सबको शायद हजम नहीं हो. Some people may kind of get disturbed with that idea, यार ये बिलीव ही नहीं हो रहा, so let's stop बट listening. रियलिस्टिकली अगर 100 करोड़ करना है, थोड़ा सा पूछूंगा अपने लिए, अगर मुझे 100 करोड़ करना है तो मुझे कितनी एसआईपी करनी पड़ेगी? I'll give you those calculations. ठीक है। ब्रेक के बाद I can give you that. बिल्कुल। I'll give you that exact. But it is achievable. It has to be. It has to be. It is Yeah. achievable. But the point that I am saying is, coming back to the topic, कि let us say realistically, मेरे गोल्स ये है, मेरे गोल्स ये हैं, हम जितने गोल्स की हमने बात करी, उस गोल्स को आपने रखा, आपने क्वांटिफाई किया, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले तो आप पूरा कर रहे हैं कि आप क्या क्या करना चाहते हैं, उसके पैसा पहले चाहिए। 100 करना है, 200 करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। दैट इज विश, दिस इज नीड। That's an output and investing. दैट्स अ विश। Okay. मेरे 100 करोड़ हो जाएं, ये तो नीड है, मुझे चाहिए ही चाहिए। Tomorrow you have children, you have to send them to education. Is that a choice? You have to send them for education. You have to give them the best education that they deserve. Right? You cannot really say anything. You have your retirement. Can you think twice? No, you need money about that. अब अगर मान लेते हैं हम, आपका टारगेट है ये सारी कैलकुलेशंस की, मेरा 10 करोड़ हो जाएगा, लेट अस से वो 8 ही करोड़ होगा। आप कुछ अपने गोल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे, आपकी जो नीड्स हैं वो आपको पूरी करनी है, वांट्स में आप मॉडिफाई करोगे, द काइंड ऑफ वेकेशन दैट यू मे टेक, यू मे वांट टू टेपर इट डाउन, द काइंड ऑफ कार, इट इज डूएबल। Yeah. But if you don't go on that rasta, if you don't do that journey, what is going to happen? You are not going to reach there. पता लगा हम शुरू ही नहीं किया, my first step, I am not taking the first step, ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा। You have to take that first step. Obviously, with all the knowledge, there are good influencers also, but the problem is, good से बचना या बचना वो उनको नहीं सुनोगे चलेगा, but बुरों को तो नहीं सुनना, अच्छों को सुनना है, जिसको भी सुनना है। Even if you are listening to this podcast, you don't have to take everything, because whatever I may say, it's not that it will kind of, it is true for everybody. Everybody has a different need. Everybody's time duration, their risk profile, it is so different for each. And not just for each, it changes for same person from time to time. So keeping the immense amount of patience you need for that amount of time is the hard work. Mutual fund के investing के अंदर You can substitute hard work as patience here. आपने 30 years से आप क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। 30 years से आप जब क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने जनरेशनल वेल्थ जिसको हम कहते हैं, या एक अच्छी वेल्थ जिन्होंने क्रिएट करी है,
बिकॉज अल्टीमेटली तो परसेंटेज ग्रोथ की हम बात करते हैं, और जिन्होंने नहीं करी है उसके अंदर आपको क्या डिफरेंस लगे उनके पैटर्न्स के अंदर, उनके बिहेवियर के अंदर, उन और उनके पर्सनालिटीज के अंदर? देखिए, फर्स्ट आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस इज लैक ऑफ डिसिप्लिन. One, lack of discipline. Two, I would say again discipline. And third, again I would say discipline. So Okay. discipline is the most important thing. A lot of time, why the discipline gets hampered? The discipline might get hampered because your conviction is not there sometimes, right? So for conviction you have to understand. Supposing you have started a journey and there are some short term not so good times. Market may have time correction, market may have price correction. If you understand, if you talk to the person who is helping you and try and understand, don't take everything just like that, but at least understand वो क्या बोल रहा है उसको सुने तो सही. Is it making logic? Then do it. A lot of times when the bad time comes, we stop listening to others. We take decisions just like that. So if you are in investing world, and specifically from the point of view investment world, and if you want to be sure shot about making money, important is in investments the so called bad times. What are those bad times? When the markets Crash. are down is actually your best time. Like in case of an SIP, what happens is market giri, you start seeing reports in the news, इतनी SIPs बंद हो गई. Why? Because no, they don't know the true value of that. वो conviction वहाँ पे miss हो गई. Right? They are looking at the percentage loss, but they're not understanding कि अब It's again the past return. बट NAV भी तो डिस्काउंट पे मिल रही है. Precisely to understand that right now, in fact, why do we recommend SIP? Because every time the markets are down, you buy more number of units at the Yes. same cost. It's a basic mathematics formula. Mathematics, yes. Right? अब आप सस्ते में तो खरीदोगे नहीं, ऐसा थोड़ा ना. सस्ते में खरीदना है तो आप ज्यादा खरीदोगे. Yeah. अभी लेटेस्ट निर्मला सीतारमन जी ने GST हटाई कई चीजों से. So what is the positive that's coming out of it? At some places the consumption will go up. Supposing you are going to go buy a car tomorrow, ऐसा नहीं है अब you will buy 2 cars, but you will probably upgrade your car. Yeah. Because और you are बेटर saving मॉडल. 10%. पहले टॉप मॉडल नहीं ले रखते थे, अब टॉप मॉडल ले लेंगे. That's what I'm saying. Yes. Better your car. Just like that. And this is for you and me. But for a lot of people, maybe they were not able to buy that two-wheeler also. Now they can. For so many regular goods. So consumption कहीं ना कहीं फर्क आता है. उस एग्जाम्पल को वापस यहाँ पे लेकर आते हैं. जब चीज सस्ती हो रही है तो ज़्यादा खरीदना बेसिक लॉजिक है. अभी उस लॉजिक को नहीं छुड़ाओ जस्ट बिकॉज अगेन आपके इमोशन ने आपको रोक दिया. राइट? तो आपको यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड इन मेरे को क्या करना है. यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग इट. अगर इफ यू टेक अवे, इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ डाटाज, इफ यू टेक अवे दो सो कॉल्ड मेरे लिए बैड गुड डेज, मार्केट गिरी हुई वाले दिन, इफ यू टेक अवे मार्केट का डाउनफॉल्स and your return of SIPs will come down by 3 to 4% at least. At least. I'm That just makes giving you an sense. off That makes sense. So these down markets are the one why your SIPs will continue to generate more returns than your regular investments. Because you are buying more for less this time. Yes. Makes sense. So that is why in investment world, SIP is the best thing to do. And I would, before we close, I would actually also want to give you one simple line. So there is a quote which says about the seventh wonder of the world, right? And what is the seventh wonder of the world? Seventh wonder of the world is compounding. And the beauty of compounding is if you invest and you earn interest, it means that compounding is working for you, you will make wonders. But if it is going against you, like say, an example,
Supposing you have a credit card, and what you are doing is you are revolving the balance. दे देंगे जब आएगा. You are doing a sin. आप पाप कर रहे हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड का ड्यू हर महीने पूरा नहीं कर रहे हैं. पीपल डोंट रियलाइज एनुअली 48% इंटरेस्ट लगता है काफी कार्ड्स पे. Even at 31%, your 50,000 will become close to 75,000 rupees. At 48%, your outstanding will become double. Yes. It's a trap. So one, though we are not discussing credit cards, but still, since we are talking about finance, and a lot of people get in that trap. If you have a credit card, rule number one, always pay 100% of your dues at the time of due. Yes. Rule number two, follow rule number one. Yes. As simple as that. Because if you are not doing that, it's a problem. So if you have a card, and supposing there is an emergency and you are not left with a choice, you are paying more than what you can pay, then please within that time go and take any other loan. You will get a loan at 12, 13, 14, 15%. Personal loans, yes. But which is much lesser than 30, 40, 48% interest. It's a simple mathematics. But the point is you have to be aware, you have to be conscious that I have to do it, and I am talking about this second when there is an emergency. But when I am talking about emergency, I would do injustice to your audience if I don't tell you something else. Which is, if you are riding a bicycle or a bike, motorbike, the first thing that you do is you put on a helmet. Yeah. Right? You don't sit down on a bike and then start. You put on a helmet, then start and then go. Likewise, when you are starting your investment journey, the first thing, the helmet for your investment journey is a contingency fund, which is an emergency fund. Which means the first thing that you do, create a fund which is equal to minimum 6 months to 12 months of your expenses. Monthly expenses. Yes, your monthly expenses should include your EMIs, your children's fees, school fees and other fees, your insurance premiums. We cannot leave insurance premium in such times. Right? Rent if you are paying, ghar ka khana, household expenses. You can leave those discretionary expenses away. Whatever these kharchas are, multiplied by 6 to 12. To 12. If I go down a further, 6 for those where both the couple is earning. Or if your job is very, very stable. 12 for those who are single earners and a family is there. ये किस asset class में रखेंगे पैसे? You have a lot of options. You can put this in bank FD, you can put this in debt funds. You have got options to that. But not like, let's say, large cap mutual funds. Absolutely not. Okay. Absolutely. This is your helmet. Got it. This is your emergency fund. So why I've brought in the emergency fund wala thing here is because we were talking about credit cards and the emergency. Gold is also a good place to keep this money, right? No. No? Why not? Gold has a lot of emotions attached with it. Biscuits. Whatever. Okay. Biscuits may have little less emotions, but then please understand, you are adding something. Emergency is not something which is in your control. Now you are thinking you will go to a jeweler, you will give him that and he will give you money and then you will come back. And supposing your emergency is of an X amount that has, so ideally not gold. Okay. Gold is not the asset class for this. Right? As I said, gold has a lot of emotions. In the old times, we used to say, भांडे बिक जाएंगे, gold नहीं जाना. Gold नहीं जाना. Yeah. Oh yeah. हाँ, कुछ लोगों की conditioning, cultural conditioning. You are not married. Yeah. If you go and ask your mother, will she give your gold to? Will she give her gold to you for? She will not. Yeah, there is cultural conditioning in gold. Behavior, emotions.
We are all bondage to that. देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट. मेरे क्वेश्चंस हाफ भी नहीं हो पाए हैं, बट आई थिंक टाइम अप हो गया है, आपको भी कहीं जाना है. सो विल एंड दिस पॉडकास्ट टुडे, और कभी प्लीज दोबारा आइएगा, सो दैट आई कैन आस्क यू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. For sure, Umer. Thank you so Thank much you, for sir. this.